वेलकम बैक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत निकाह केस में सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फैसला सुनाया है जो कि महफूज किया गया था। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत निकाह केस में सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने यह फैसला सुनाया है। हमने देखा ये फैसला डिले भी हुआ, पहले इसको 2 बजे सुनाया जाना था, फिर 1 बजे भी सुनाया जाना था, लेकिन अब फिलहाल ये फैसला सुना दिया गया है और 7 साल दोनों को इस केस में सजा सुना दी गई है। हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत के निकाह के केस में जो अपील की गई थी वो भी खारिज हो चुकी है और अहम फैसला ये था जिस पर सब तमाम की निगाहें टिकी हुई थी वो सुना दिया गया है। अवैस अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, बड़ा फैसला आ गया है, किन ग्राउंड्स पर यह सजा सुनाई गई है, क्योंकि 7 साल ये मैक्सिमम सजा है? जी बिल्कुल, देखिए इस हवाले से जो है आज जो है गुज़श्ता रात जो जरा मुकम्मल हुई थी, तहम आज जो है वो जज कुदरतुल्लाह ने फैसला सुनाया। फैसले में 7 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए जो है वो जुर्माना जो है वो आयद किया गया है बानी तहरीक इंसाफ के ऊपर। इसके साथ साथ जो है कल के रोज जो तफसीली तौर पर जो है गवाहान के ऊपर जरा हुई थी, 4 गवाहान के ऊपर जरा मुकम्मल हुई थी और उसके साथ साथ जो है वो तकरीबन 14 घंटे तक ये समाज जारी रही थी और कल फैसला महफूज हो गया था। तहम आज जो है पहले फैसला 1 बजे सुनाने का कहा गया था, तहम 1 बजे से 2 बजे तक जो है टाइम दिया गया। उसके बाद डिले होते होते अभी तकरीबन 3:45 बजे के करीब जो फैसला सुनाया गया है। फैसले में बानी तहरीक इंसाफ को जो है वो 7 साल कैद की सजा। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, you're right, 300. I was going the other way around. So that was quite a shock to the economy. हर कोई आता था, कहता था कि आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, we were obligated to make sure that we don't intervene in the market, but all the investigations pointed to the huge amount of currency smuggling alongside and cross-border that was destabilizing our currency. So a joint action was launched, and alhamdulillah today I was just checking the exchange rate for yesterday. It had reached to 279.48 relative to the 300 that you rightly pointed out. And हम लोगों ने narrow किया है spread between the open market and the official rate. तो उसकी वजह से stabilization हो गई है. There's a lot of confidence, and clearly it has helped not only restore the confidence but brought down the cost of doing business in these last few months. आपको पता है one of the most important elements in all this was also the trade deficit की reduction, which of course is also a collective wisdom of few entities together. Trade deficit now is 30% on a year-on-year, reached about 1.9 billion, which is less than 2.7 billion जो corresponding period of last year. इसी तरह, although we had a rocky start on the exports, but the exports have grown 27% to 2.8 billion. और ये मैं आपको बता सकती हूँ कि काफ़ी interface रहा है with the industrialists and also with the external with different trading partners of ours, और काफ़ी ऐसे काम किए गए हैं जिससे हमारी export potential and export market इंशाल्लाह बढ़ेगी from what we have made an effort to achieve. Now also आपने सुना होगा Pakistan Stock Exchange, and one of my colleagues is sitting here from PSX. I think from very low we were able to, or it was only the good sentiments that helped us take the Pakistan Stock Exchange Index to over 63,000 plus. Now, of course, today it's 62,393
index है. I have to say that there has been reform in virtually every segment of the economy. And I'd like to share that before I go into what we call in our corridors the most difficult and most penetrating, but number one problem is domestic resource mobilization in this country. So I'll touch that at the end, but let me share with you some of the achievements of the finance division that I represent, more the Ministry of Finance. Caretaker government, as you know, as I mentioned, took proactive measures. Economy, alhamdulillah, is stabilized. Market confidence, as indicated by the PX and other indicators, is decent. Domestic and global challenges were enormous. As you know, the global commodity prices were very high when we came in. We also had been hit by the floods, so we had to manage the expenditures and implementation of that without tightening the purse at that time. And I can go on and on in terms of the fiscal challenges that we faced. Now, obviously, we did a lot of work. उसकी वजह से जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी थी कि IMF की जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, जो was negotiated by the previous government, उसको हमने बगैर किसी नॉइस के उसको डिलीवर किया है. And then we were able to bring in 700 million, but this was, of course, in January 2024. We were hoping it will come earlier, but उनके processes and procedures की वजह से थोड़ी देर हो गई इसमें. I can tell you that we also, because this was getting delayed, we have worked incredibly hard कि हम World Bank, Asian Development Bank, Asia Infrastructure Bank, उनके जितने भी quick dispersing assistance थे उनको हमने fast track किया. We made sure that we had adequate representation on the board of these of multilaterals to be able to get the release in time. नहीं, yeah, बाहर जाके बात. So we we got, fortunately, because of that work, थोड़ा सा IMF delay भी हुआ, तो we got 1.6 billion in December itself. And if you had been in Ministry of Finance, you would have appreciated कि कितना मुश्किल था, क्योंकि हमने उसको de-link करवा दिया IMF के प्रोग्राम से, जो कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में. The government also successfully curtailed the fiscal deficit at 1.3% of GDP during July-November 2024 in the presence of significant rise in markup expenditures. और markup का तो आपको पता है, it hits you and it hits us. ये interest rate जो high हैं, ये actually macroeconomic management में help करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इसने government कि जो डेट है, डोमेस्टिक डेट को भी बहुत इंक्रीज कर दिया. न सिर्फ आपकी बिजनेसेस अफेक्ट हो रही हैं, बट इट्स आल्सो इम्पैक्टिंग द डेट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान ऑन अ मार्जिनल बेसिस. इस वक्त जो हम बोरो कर रहे हैं, वो बेसिकली बोरो कर रहे हैं टू पे आवर लायबिलिटीज़. इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन द रियल डेट इज लिमिटेड, आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट. On external front, हमारा current account deficit during July-December fiscal year 2024 has been narrowed down by 71.1% to 831 million, against a deficit of 3.6 billion during the same period last year. This improvement is attributed, of course, to the 35.2% decline in trade deficit. इसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ काफ़ी हुई है. आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, और क्योंकि आपको LCs खोलने में मुश्किल आ रही थी, बट हमने रिक्वेस्ट की थी स्टेट बैंक को टू रिलैक्स द ओपनिंग अप ऑफ द LCs. ऑफ कोर्स
स्टेट बैंक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, and they really have to manage the foreign exchange reserves. हम लेकर आते हैं foreign exchange reserves, but day to day management वो करते हैं, तो हमारी उनसे काफ़ी क्लोजली बातचीत होती है. आप आवाज़ क़ौमुना अवोद फार जमीयत उलमा इस्लाम चन्नो है जमात नदा बिल्लाह फ़ाज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जु'i वल खौफ बिमा कानू यसनऊन. अल्लाह ताला दे अगे आबादे मिसाल वर कई चलता अमन हम वो इंसानी हुकूक महफूज वो जान माल और इज्जत और आबरू महफूज हुआ और अमन सुकून वो और ज़का चिदू रोज़ी बा लहर तरफ लरसदा मार्च. It was my first priority. हम इसको पहले महीने में कर लेते, लेकिन we were not allowed to appoint the board members under the caretaker government, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत अभी हमें दिक्कतें आ रही हैं to improve the corporate governance of this country.